Hey guys, welcome to Unacademy. Welcome to our channel 11 CBSE Commerce Quest. So in today's session, we'll be discussing how to ace questions, short answer type and long answer type questions in your English chapter. Okay. So let's quickly understand about this channel. So 11 CBSE Commerce Quest gets you all questions and answers for all question types that come in all of your subjects, so including English. So we'll be discussing every subject in the format of questions and answers on this channel. So quick introduction about myself. So I've done BTech in Instrumentation and Control Engineering. I have 9+ years of working experience and teaching English, and I'm a faculty from Hyderabad. So what you're going to get on our channel is daily live classes. So basically what these daily live classes are going to do is they're going to give you a real-time experience of attending classes. So it's just like attending a regular class but at the convenience and comfort of your home. तो आप घर पे बैठे बैठे एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और इसमें हम हर एक टॉपिक आपके हर सब्जेक्ट का क्लियर करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स फॉर्मेट में. You also have live tests and quizzes, which means आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका एक रियल टाइम टेस्ट भी होगा. तो ये टेस्ट और क्विजेस आपको बताएंगे whether you need to improve in a particular area or you're already doing a great job in it. सारे कोर्सेज जो हमारे रहेंगे यहाँ पे लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड सेशंस में, एवरीथिंग इज गोइंग टू कंप्लीटली स्टिक टू द सीबीएसई पैटर्न. तो हर एक लेसन और हर क्वेश्चन और आंसर जो है वो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से रहेगा. सो ऑल योर कोर्सेज आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पैटर्न, व्हिच मींस दिस पर्टिकुलर सेशन और ऑल सेशंस हियर आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पॉइंटेड एट योर एग्जाम प्रिपरेशन. Coming to this unlimited access, so let's say किसी एक particular day पे आप live session नहीं attend कर पाते हो, तो आप ये unlimited access के through recorded sessions attend कर सकते हो. So you can attend the same recorded classes of these live classes later. Let's say you have an exam in 2 days and you want to recollect or you want to revisit or revise the given subject or session. You can always attend this unlimited access. You always have this unlimited access to revisit that particular session. And this also gives you the opportunity to prepare with top educators. So you don't have to stick to one particular teacher or one particular session. You can attend any session of your choice of any educator of your choice. So you can attend the same session or live session and recorded sessions of other faculty members as well. So here you have this opportunity to attend classes from different educators. Now students, ये एक particular ऐसी चीज़ है जो आपको regularly स्कूल या फिर आपके प्राइवेट ट्यूटर्स में भी नहीं मिलेगा, कि आपको वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स एक ही चीज या एक ही टॉपिक को पढ़ाए. It's going to be a comprehensive syllabus, which means we're going to cover all the topics and all chapters and all lessons under your CBSE syllabus. All you have to do is go into the Google App Store or Apple App Store and download our Unacademy learning app, and in this here you need to choose the channel that you want to subscribe to, and you can subscribe to our channel to get more videos and more recorded sessions. Now about this subscription very quickly. So this is our channel 11 CBSE Commerce Quest. So this particular channel on this 12-month subscription will cost you 12,500. Now students, अगर आप कोई प्राइवेट ट्यूटर रखते हो तो हर सब्जेक्ट का अलग ट्यूटर रखना पड़ेगा एक, और दूसरी चीज वो ट्यूटर्स का कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव हो सकता है और आपको उनके हिसाब से टाइम निकाल कर आपको सेशंस अटेंड करना पड़ेगा. बट हियर you can attend sessions at your convenience at the comfort of your house, and also the cost is just 12,500 for 12 months. And that also, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं RITI, if you use my code here, you will get a 10% discount, wherein your 12 months subscription is only going to cost you 11,250 rupees. Meaning आपको हर सेशन और हर लाइव क्लासेस, क्विजेस, ये सब चीजें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 11,250 rupees में. So let's start with today's session.
This is Hornbill Chapter 1, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में सीखा था, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हमने पूरे लेसन को एक बार समझा था और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किया था। तो उस सेशन में हमने ये भी देखा था, ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो ये ऑथर जो मिस्टर खुशवंत सिंह है उन्होंने लिखा है उनके ग्रैंडमदर के बारे में। So this particular lady mentioned in the Portrait of a Lady title is Mr. Khushwant Singh, the author's grandmother. So in this whole session, whenever we discuss or use the term the author, we will be talking about this Mr. Khushwant Singh जिसने ये स्टोरी को लिखा है। और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में दो जो ग्रैंडमदर है, ये लेडी जो है वो ये ऑथर की ग्रैंडमदर है। Now this particular session's main motive is to understand and ace in short and long answer type questions. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बट जब क्वेश्चन और आंसर्स लिखने की बात आती है एग्जाम में, हम हमेशा सोचते हैं कैसे इसको लिखा जाए, हाउ डू वी आंसर द क्वेश्चन करेक्टली और सबसे ज्यादा स्कोर कैसे बढ़ाए अपना और सबसे ज्यादा नंबर कैसे लेके आए। So in this session what we are going to do is we are not only going to discuss the question and the answers in detail कि क्या-क्या पॉइंट्स हमने लेसन में सीखा है और उन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, but also we are going to look at small grammar tools through this session where जिनके लिखने से या जिनके इंक्लूड करने पर आपकी राइटिंग एबिलिटी, आंसर लिखने की जो एबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी। Let's start with the first question. So these questions are from the NCERT textbook. So we'll look at these questions now. So let's start with the first question. Discuss the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Now, let's just briefly discuss the lesson here. तो जब वो लेसन हमने लास्ट सेशन में किया है उसमें ये रहता है कि ऑथर जो है वो अपना स्टोरी सुना रहे हैं अपने बचपन से लेकर अपने यूथ तक, जो उनके ग्रैंडमदर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है। सो ही स्टार्ट्स द स्टोरी बाय टॉकिंग अबाउट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड। जब वो बहुत छोटे थे तब उनके पेरेंट्स जो है उनको अपने ग्रैंडमदर के पास छोड़कर सिटी जाते हैं जॉब की तलाश में। एंड व्हेन द ऑथर इज स्टेइंग विद हिज ग्रैंडमदर, तब जो उनकी रिलेशनशिप है उसको पहले दिखाया जाता है। उसके बाद जब उनके पेरेंट्स सिटी में अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं तो ऑथर के पेरेंट्स ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर को अपने पास सिटी में रहने के लिए बुला लेते हैं। एंड व्हेन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर मूव टू द सिटी, द ऑथर स्टार्ट्स अटेंडिंग अ डिफरेंट स्कूल एंड द ऑथर स्टार्ट्स हैविंग हिज ओन लाइफ, जो जिसकी वजह से उनके और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में डिस्टेंस आने लगता है। And then when the author becomes a young person, he moves off abroad in order to study or for his higher education। और उस समय में ये दिखाया जाता है कि ऑथर और उनके ग्रैंडमदर के बीच अब बहुत सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। So this is the story, and when the author comes back, the grandmother waits eagerly for him to return and she sees him before she passes away. So this is the basic gist of the story. तो इसी स्टोरी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्कस द थ्री फेजेस। फेज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो फेज ऑफ लाइफ जो रहता है वो अलग अलग फेजेस रहते हैं, जैसे आई हैव अ फेज ऑफ चाइल्डहुड, देन यू हैव बॉयहुड और एडल्टहुड और ऑल ऑफ दीज, ओल्ड एज एक्सेट्रा। सो ये फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। तो ही इज आस्किंग अस टू डिस्कस द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। Now let's understand the three phases here. The three phases are childhood. The author begins with his childhood relationship with his grandmother. He talks about how close they were. He talks about how they did everything together, including going to school and walking back home. तो जैसे कि हमने स्टोरी में ये देखा है कि जो ऑथर है और उनकी ग्रैंडमदर है वो हमेशा स्कूल साथ में जाते थे। वो इसीलिए क्योंकि ऑथर का जो स्कूल है वो बिल्कुल
टेम्पल के पास में था, बगल में था, और वो टेम्पल का जो प्रीस्ट था he was a teacher of the school also. So वो ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर साथ में स्कूल जाते थे, जहाँ पे ऑथर used to study the alphabet and prayers from the priest, and the grandmother used to sit and read her scriptures. तो वो ग्रैंडमदर जो है वो अपना प्रेयर करती थी और वो ऑथर जो थे वो अपना पढ़ाई करते थे स्कूल में. So this was something which was their routine. That means every single day this was a routine which the author and his grandmother had. तो जब भी वो लोग साथ में जाते थे वो लोग डॉग्स को चपाती, स्टेल रोटीज ये सब खिलाते थे, and this had become a ritual for them. So here this is exactly what we are writing in this particular answer. So we are basically saying that in these three phases, the first phase, that is the childhood, when the author stayed with the grandmother in the village. The author begins with his childhood relationship. He talks about how close they were. Lesson में एक बहुत अच्छा statement रहता है जो लिखा रहता है, I and my grandmother were good friends. तो यहाँ पे हमको पता चलता है कितने क्लोज थे ग्रैंडमदर के साथ वो ऑथर. वो दोनों जो भी कुछ करते थे सब हमेशा साथ में करते थे. He talks about how they did everything together, including going to school and walking back home. तो ये उनका रेगुलर रिचुअल था. ग्रैंडमदर उनको रोज रेडी करती थी स्कूल के लिए. He used to go to school and he used to come back together with his grandmother. Now इसमें हमको इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर question है. So the difference between a short answer question and a long answer question is, in a short answer question you are expected to only write what is the point. आपको बिल्कुल एकदम to the point लिखना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको लिखना होगा थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. सो अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इसी पैराग्राफ को हमको शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो वी विल हैव टू ऐड सेंटेंसेस लाइक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर वेरी गुड फ्रेंड्स. He and his grandmother would go to the school together because the school was close to the temple, and the grandmother used to read the scriptures while the author studied his regular education, pursued his regular education at the school. They used to walk back home together by feeding the dogs on the way. The grandmother used to dress up the author every day for school. This had become a ritual where both the grandmother and the author were always together. तो जब हमको इसी सेम पॉइंट को अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़े एक्स्ट्रा चीजें जो लेसन से हमको मिलते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दैट an answer to a question is nothing different from what you've learned from a lesson. आप जो भी लेसन में पढ़ते हो उससे आंसर्स बहुत ज्यादा अलग नहीं होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना आंसर हमको देना है. व्हाट पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप डिमांड्स हाउ मच इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, उसमें हमको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर करना है. So because this is a short answer type question, we are only talking about how during the childhood the author talks about his grandmother and how close they were, and he also talks about how they did everything together. We don't have to elaborate और उसको बहुत अच्छे से हमको समझाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के आंसर पे. Let's look at the second point, boyhood. So here he is talking about the school days when they shift to the city. अब वो लोग सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी ऑथर थोड़े और बड़े हो गए हैं. तो ये बॉयहुड जो है वो उस पीरियड का बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑथर सिटी शिफ्ट हो चुके हैं और थोड़े बड़े हो चुके हैं. The author here mentions how they grew slightly apart because of his grandmother's disapproval of what he learned in school. तो यहाँ पे अगर हम लोग लेसन को वापस जाते हैं लेसन की तरफ तो हमको ये पता चलता है कि जो ऑथर थे वो जो भी कुछ अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे वो अपने ग्रैंडमदर के साथ घर आकर डिस्कस करते थे. बट ड्यूरिंग दैट डिस्कशन ही रियलाइज्ड दैट द ग्रैंडमदर डिसअप्रूव का मतलब होता है शी डिड नॉट लाइक. उनको पसंद नहीं आता था जो चीजें ऑथर अपने स्कूल में सीखते थे. सो द ऑथर यूज्ड टू लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस
So what the author learned did not, the grandmother did not like it, because grandmother को लगता था कि जो उनके पुराने स्कूल में विलेज में जो सिखाया जाता था और जो ग्रैंडमदर ने खुद भी शायद सीखा होगा उनके लाइफ में, और वो खुद जो अपने ग्रैंडसन को सिखाना चाह रही थी, जो स्क्रिप्चर्स थे, उनके प्रेयर्स थे, जो गॉड के बारे में वो सिखाना चाहती थी, वो सब चीजें जो है ऑथर को स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा था। यहाँ पे उनको ज्यादातर साइंटिफिक चीजें और पढ़ाई दी सिखाई जा रही थी। So here the author talks about how they grew slightly apart because the grandmother did not approve of what he learned in school. तो grandmother को क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा था वो क्या स्कूल में सीख रहे थे, और क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी इस बारे में, grandmother और वो author जो है वो उनके boyhood के समय थोड़े से distant हो गए थे। Now let's move to the third point, that is adulthood. The author mentions how his relationship with his grandmother snapped because he spent less time with her and went off to a foreign university for further studies. Okay, so the author mentions how his relationship with his grandmother snapped because he spent less time with her and went off to a foreign university for further studies. So here in the lesson also, if you observe, they use the word snap. तो यहाँ पे जो word snap का मतलब होता है break off. कोई भी चीज जो suddenly cut हो जाए उसको snap बोलते हैं. So here the author mentions how his relationship with his with his grandmother snapped because he spent less time with her and went off to a foreign university for further studies. So here, if you observe, in the adulthood, the author goes off to a foreign university to study. मतलब जो author है उनका priority यहाँ पे हो जाता है अपना higher education. So the author decides to go to a foreign country in order to study. And he talks about the snapping of the relationship, क्योंकि अभी तक जब तक वो चाइल्डहुड में थे और बॉयहुड में थे, वो और उनकी ग्रैंडमदर एक ही घर में रहते थे। सो चाइल्डहुड में वो अपने ग्रैंडमदर के अंडर थे, द ग्रैंडमदर टुक केयर ऑफ हिम, एंड ड्यूरिंग द बॉयहुड द ग्रैंडमदर एंड द चाइल्ड प्रॉबेबली द ऑथर प्रॉबेबली डिड नॉट हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, फिर भी वो एक रूम शेयर करते थे, और वो ऑथर जो भी स्कूल में पढ़ते थे, जो भी कुछ उनके साथ होता था, वो अपने ग्रैंडमदर के साथ शेयर करते थे। Now that he decided to move away from home to a foreign location, now this has become extremely difficult for them to manage, क्योंकि अब वो दोनों साथ में नहीं रह रहे थे। वो यूनिवर्सिटी में ऑथर को अलग कमरा दिया गया था और अब वो देश छोड़ के भी जा रहे थे। So during the adulthood, the relationship between the author and the grandmother had broken off because the author did not live with his grandmother anymore. So here if you observe, ये एक 3 marks का question है. So this particular question is a short answer type question जो सिर्फ 3 marks का है. तो यहाँ पे मैंने ये particular word 3 को highlight इसीलिए किया है क्योंकि जब भी आप कोई भी question में different ways, 3 points, 2 points, इस प्रकार से जो phrases दिखते हैं आपको, ये वर्ड्स दिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसमें याद रखिए कि हर क्वेश्चन का इस टाइप का आंसर जो है वो पॉइंट के बेसिस पे होना चाहिए। तो जो पैराग्राफ क्वेश्चंस है और पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें डिफरेंस यही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस इन दिस सेशन वेयर we will notice what is the difference between the para based questions, उसके questions कैसे दिए जाते हैं कि जब आपको पता चले कि किस question के लिए हमको point wise answer करना है और किस question पे हमको paragraph के basis पे answer करना है। So basically in this particular point here, this particular question is asking for 3 phases of the author's relationship और ये short type answer question है, सिर्फ 3 marks का, meaning each point will have only 1 mark। तो कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन के आंसर आप जानते हो कि आपका सिंपल से सिंपल होना चाहिए और जितना कम इंफॉर्मेशन में आप ये दे सकते हो उतने कम इंफॉर्मेशन में आपको ये देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे और बहुत कंसाइज और ब्रीफ पॉइंट्स में आंसर दिया है। So this is a particular question, it's a short answer type question where we have given the answer in 3 different points and these 3 points will carry 1 mark each, so आपको 3 marks मिलेंगे इस particular question के लिए। Let's move to the next question.
Here also, if you observe, we have the same word three. Discuss three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. So three reasons पूछ रहे हैं, why was the grandmother disturbed when the author started going to the city school? The following are the reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the school. So remember, कोई भी ऐसी question जब पूछा जाता है कौन से three reasons है, ऐसा हुआ है या नहीं, did this really happen, or if this has happened, what could be the possible reason, or any such question when such a question is given, it's always important to write a small introduction to it. जैसे यहाँ पे भी the three phrases are हमने जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में, ऐसा लिखने से वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है आंसर पे. इट शोज दैट वी आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट टू कन्वे एंड वी आर गोइंग टू इलैबोरेट इट इन द फॉर्मेट ऑफ पॉइंट्स. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. In the same manner, here also we have mentioned the same thing, or remember this particular introduction has majorly most part of your question. तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द की वर्ड्स जो है, व्हाट डू यू कॉल की वर्ड्स, आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू नीड टू प्लेस फ्रॉम द क्वेश्चन इन योर आंसर. तो इनको हम की वर्ड्स बोलते हैं. तो जो ये इंट्रोडक्शन है इसमें जो की वर्ड्स है वो की वर्ड्स हमको मिलते हैं इसी क्वेश्चन से. Discuss three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. The following are the reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. His grandmother did not like the Western or science-based teaching that took place in the school. She was used to the old school teaching in their village. So यहाँ पे हमको समझ में ये आता है कि जो ऑथर घर आकर उनके ग्रैंडमदर के साथ डिस्कस करते थे. सो इन द लेसन टू बी प्रिसाइज, द थिंग्स दैट ही डिस्कसेस विद हिज ग्रैंडमदर आर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अदर साइंटिफिक थिंग्स दैट ही लर्न्स एट स्कूल. सो व्हेन ही कम्स एंड डिस्कसेस दीज थिंग्स विद द ग्रैंडमदर, वो बहुत दुखी हो जाती है ये सुनकर कि उनके ग्रैंडचाइल्ड जो है वो अभी सिर्फ साइंस सीख रहे हैं स्कूल में और उनके स्कूल के करिकुलम में स्पिरिचुअलिटी और प्रेयर्स इंक्लूडेड नहीं है. So the grandmother did not like the science-based teaching that was happening in the school. She was used to the old school teaching in their village. तो मतलब जो उनके विलेज में जिस प्रकार का टीचिंग होता था, that is the priest used to teach the children there. The priest used to not only teach alphabet to them, but also the priest used to teach them prayers and about the scriptures, holy scriptures. His grandmother was upset that his new school did not teach anything about God or spirituality or their holy scriptures. So his grandmother was also upset that his new school did not teach anything about God or spirituality or their holy scriptures. So basically इसमें जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था, the same point is repeated in this particular point. तो ये जो दो पॉइंट्स है इसमें एक सिमिलैरिटी है और डिफरेंस भी है. क्योंकि उनके नए स्कूल में स्पिरिचुअलिटी और गॉड के बारे में नहीं सिखाया जा रहा था, she was upset. And why was she also upset? Because they were not teaching this and they were teaching science related stuff. So here these are the 2 points that are majorly important here. और तीसरा point ये है, his grandmother did not believe in gentle folk learning music as she considered it to be related to and learned by only indecent people and beggars. तो उनकी ग्रैंडमदर को म्यूजिक जो सीखते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत ओपिनियन था. वो नहीं चाहती थी कि उनका ग्रैंडसन म्यूजिक सीखे because she did not think very highly of people who learned music. She had an opinion that music was learned only by indecent or vulgar people and by beggars. तो इसीलिए उस वजह से म्यूजिक, जैसे वो ऑथर मेंशन करते हैं दैट उनके स्कूल में म्यूजिक क्लासेस भी स्टार्ट हो गए या वो म्यूजिक सीख रहे हैं स्कूल में, द ग्रैंडमदर स्टॉप्स टॉकिंग टू हिम. सो द 3 reasons why his grandmother was disturbed, the 3 reasons here are: the first reason, that she did not like the science based teaching that was happening. 2, she was upset that the school did not teach anything related to prayers or God. The third point is that the school taught music which the grandmother disapproved of for gentle folk.
Let's move to the next question. But before that, I want to repeat. मैं एक और बात रिपीट करना चाहती हूँ कि ये है कि कोई भी क्वेश्चन जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. उसमें सिर्फ आपको टू द पॉइंट आंसर करना है. और जो भी क्वेश्चंस में आपको ये 3 रीजंस, 3 फेजेस, डिफरेंट वेज, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको याद रखना है कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना रहता है और उसके बाद हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट के बेसिस पे देना चाहिए. तो जितने पॉइंट्स आप लिखोगे उतना आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें. सो जैसे यहाँ पे ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो इसका भी आपको ये 3 पॉइंट्स का 3 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे. और ये इंट्रोडक्शन जो ये बोनस होता है, which means even if you go somewhere wrong, this will save you from reducing your overall score. Discuss 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. तो अभी जब वो ऑथर बड़े हो जाते हैं और कॉलेज चले जाते हैं, अब वो उनके ग्रैंडमदर के साथ नहीं रहते हैं. सो दिस इज अगेन कमिंग बैक टू द टेक्स्ट बुक स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन. जो इसके पहले वाले सेशन में हमने सीखा था उसके बेसिस पे वापस हम एक बार रिवाइज करते हैं इस पॉइंट को. जब ऑथर और बड़े हो जाते हैं, वो कॉलेज चले जाते हैं, एंड वंस ही मूव्स टू कॉलेज ही डज नॉट लिव विद हिज ग्रैंडमदर एनीमोर. He was given a college room जहाँ पे वो रहते थे. तो वो जो the word snapped that we learned some time ago, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ऑथर यूज करते हैं कि जब मैं कॉलेज चला जाता हूँ और गया था, जब मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ अब नहीं रह रहा था, our relationship snapped. So here let's look at this. Spent her days after he grew up. So मतलब जब ऑथर चले गए थे घर छोड़कर, उस समय ग्रैंडमदर ऐसा क्या करती थी जिससे उनका दिन बीत जाता था. So let's look at the answer now. When the author started going to the city school, he and his grandmother spent less time with each other, and she accepted that this with resignation. She in turn spent her days in the following ways. So the moment the author stopped spending a lot of time with his grandmother, the moment he went off to college, or the moment he stopped spending time with her, what are the 3 things which his grandmother did to spend her time? So if you look at this particular point, यहाँ पे हमने लिखा है she accepted this with resignation. ये पॉइंट हमने डायरेक्टली लिया है लेसन से. So lesson में भी same to same mention किया जाता है that the grandmother has accepted her secludedness with resignation. So this is the exact phrase that they use in the lesson. So secludedness is basically loneliness. वो जो उनका अकेलापन था उसको उन्होंने resignation के साथ accept किया है. Resignation का मतलब होता है to give up. कोई भी चीज़ को अब ये नहीं हो पाएगा करके छोड़ देना resignation होता है. So she accepted this with resignation. She in turn spent her days in the following ways. So please remember that जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, अगर आप लेसन से कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इनको आप पिक करके अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हो, ऐड करते हो, लिखते हो, तो आपका स्कोर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हो उसमें आप जो भी ये फ्रेजेस हम लोग सीखते हैं, जो भी फ्रेजेस डिस्कस करते हैं, उन फ्रेजेस को थोड़ा याद रखिए so that you can use those phrases in the answers later. Just when you use these phrases in the answers, it appears that you are well prepared, you have understood the text, and also you have the ability to remember what the text has said. तो आपको कितना याद है इसका भी हमको एग्जामिनर को एक अंदाजा मिलता है जब आप कोई भी फ्रेज या कोई भी चीज को टेक्स्ट बुक से याद रखकर सही जगह पे यूज करते हो. It's not that you use it anywhere, but it has to be in the correct place also. तो ये जो phrases आप यूज करते हो, पिक करते हो टेक्स्ट बुक से, उसको सही तरीके से भी यूज करना पड़ता है. जैसे यहाँ हमने यूज किया है she accepted this with resignation. So this is the point which we are using in this question because it's apt here in this particular answer.
She in turn spent her days in the following way. So what did she do? She spent most of her time on the spinning wheel. ये भी author एक text book में mention किया गया है that she spends most of her day on the spinning wheel. वो वहाँ से अब हटती थी नहीं और किसी से बात नहीं करती थी and she used to spend her whole day on the spinning wheel. She continued to pray. She did all her work while constantly telling her beads. So this is again a particular phrase which we have picked up from the टेक्स्ट बुक डायरेक्टली. तो इसी सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते थे कि कॉन्स्टेंटली वाइल यूजिंग हर बीड्स और कॉन्स्टेंटली वाइल प्रेइंग, इस प्रकार से हम लिख सकते थे इसको. बट हमने क्या किया है, जो टेक्स्ट बुक का जो फ्रेज है उस फ्रेज को हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, विच इन दिस वे यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बिकॉज दिस टेल्स दैट यू हैव बीन पेइंग अटेंशन टू द लेसन. आप लेसन पे कितना अटेंशन पे कर रहे हो इससे पता चलता है जब आप ऐसे फ्रेजेस जो है उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करते हो. तो लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस. शी कंटिन्यूड टू प्रे, शी डिड ऑल हर वर्क व्हाइल कॉन्स्टेंटली टेलिंग हर बीड्स. तो यहाँ पे टेलिंग का मतलब होता है टू काउंट और टू कीप मूविंग लाइक दिस. ओके, सो जो बीड्स होते हैं उनको जब हम लोग मूव करते रहते हैं तो वो काउंट के लिए होता है, जो 108 बीड्स होते हैं एक रोजरी या माला में. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर. Now let's move to the third point. She spent all of her afternoons feeding the sparrows in their veranda. So यहाँ पे हमको बताया जाता है कि विलेज में the grandmother's pastime was to feed the dogs. वो डॉग्स को खाना खिलाती थी विलेज में. और यहाँ पे जब वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, because there were no dogs on the street, this is also a point which the author mentions in the text book. Because there are no dogs on the street, now the grandmother spends most of her afternoons feeding sparrows in their veranda. तो अभी ये तीन चीजें हैं जो वो ग्रैंडमदर करती है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑथर. एब्सेंस ऑफ द ऑथर मीनिंग जब ऑथर उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते या वो जब कॉलेज चले गए थे, ये उनका डेली रूटीन बन चुका था. सो हियर आल्सो एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पे डिस्कस 3 वेज लिखा हुआ है. सो वी हैव डिस्कस्ड दीस 3 इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स. तो ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. जैसे हमने ये क्वेश्चन में देखा है 3 वेज लिखा हुआ है, इसीलिए 3 डिफरेंट पॉइंट्स में आंसर किया है. उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस द ऑड वे, meaning one particular way. So here we don't have a lot of points to mention. Here we need to give the answer in a paragraph format. So this is also a short question type. So the difference between the previous questions and this question is that in the previous questions we had to answer everything in points. हर एक क्वेश्चन में एक बहुत स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखा हुआ था, 3 phases, 3 ways, 3 different things, etc. तो इस प्रकार से हमको पॉइंट्स में आंसर देना था. यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, बट इसको हम लोगों को इलैबोरेट करना है बिकॉज दिस इज अ 3 marks question. So here we need to give the answer in about 50 to 60 words. So we need to elaborate the point and write in 1 paragraph. So let's look at the question. Discuss the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. So we'll just quickly again go back to the text book जो हमने अपने previous session में सीखा है और extract based questions में उसको एक बार फिर से हम understand करते हैं, recollect करते हैं. So basically here the author goes off to a foreign university and he comes back after 5 years. जब ऑथर 5 years के बाद रिटर्न आते हैं, उनकी ग्रैंड मदर जिंदा रहती है उनको देखने के लिए. और जिस दिन वो ऑथर रिटर्न आ जाते हैं, दैट पर्टिकुलर डे द ग्रैंड मदर बीट्स ड्रम्स सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट रिटर्निंग वॉरियर्स. तो उस पर्टिकुलर डे द ग्रैंड मदर डज नॉट इवन प्रे. वो उस दिन प्रे करना भी छोड़ देती है और सिर्फ ड्रम्स बीट करते हुए गाने गाती है पूरे नेबर्स को बुलाकर. So this is exactly what we are talking about. And इसके just next day वो बीमार हो जाती है और उनका डेथ हो जाता है. So here this particular question is talking about what is the odd way in which she behaved just before her death. तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि ऑथर के रिटर्न आने के बाद से उनके डेथ तक जो भी कुछ हुआ है उस इवेंट्स को हमको इसमें कनेक्ट करना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस सिंस द ऑथर रिटर्न फ्रॉम हिज फॉरेन ट्रिप, दैट इज फ्रॉम हिज एजुकेशन, एंड द पॉइंट व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड. सो लेट्स लुक एट द आंसर हियर.
The author's grandmother beat drums singing songs about warriors. Homecoming the day, the author returned, and that was the first time the author saw her not praying. So if you look at this, the reason why I have put these parts in a different color is because these are the phrases and small words which we picked up directly from the textbook again. तो ये जो बाकी sentences हमने लिखा है नॉर्मल जो कलर में है, ब्लू कलर में, जो ये वाले लाइट ब्लू कलर में जो है वो सब एक्सर्प्ट्स जो है वो हमने टेक्स्ट बुक से लिया है और बाकी जो है वो कनेक्टिंग सेंटेंसेस है. तो इन एक्सर्प्ट्स को हम एक मीनिंगफुल तरीके से इस सेंटेंसेस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ सेंटेंस. So basically this particular question, if you see, we have taken a lot of information from the textbook, but we are using our own way to connect them into the correct order. So let's look at this answer. The author's grandmother beat drums singing songs about warriors homecoming the day the author returned, and that was the first time the author saw her not praying. So ये सबसे बड़ी odd चीज थी यहाँ पे. Why is this odd? Odd का मतलब क्या होता है? Something that is different from regular. जो एक routine होता है उससे जो चीज different होती है उसको odd बोलते हैं. So the grandmother's routine was to basically pray every day, spin her wheel, and to feed the sparrows. This was her routine. So anything that she does not do in her routine would be odd here. So यहाँ पे odd क्या था? उन्होंने उस दिन prayer नहीं किया था अपना और जोर जोर से गाने गाते हुए वो drum beat कर रही थी. Next sentence. Hence the next day, although she was ill, she started to pray as she had to complete her prayers that she missed the previous day. तो यहाँ पे एक और चीज ये है कि उन्होंने पहले वाले दिन जो प्रेयर्स को मिस किया है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए she was praying more on the next day. So next day the grandmother had become ill. She became वो बीमार हो गई थी. उसके बाद भी उनको प्रेयर्स कंप्लीट करने थे क्योंकि उन्होंने एक दिन का प्रेयर स्किप कर दिया था. So complete her prayers that she missed the previous day. She continued her praying despite the protests of the author and his family. तो ये लास्ट सेंटेंस में हमको ये पता चलता है कि ऑथर के फैमिली और ऑथर ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की है because she was not well. They were scared that she would overstrain herself. So the word overstrain also is used in the textbook. So they were scared that she would overstrain herself. इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि वो उनकी ग्रैंडमदर ऐसा ना करे और रेस्ट कर ले. So this is one particular idea which was very odd. The first odd thing she did was she did not pray, which was something that was beyond the routine that she does every day. And she beat drum singing songs, जो कि बहुत फर्स्ट टाइम है जो ऑथर ने अपने लाइफ में देखा है उनकी ग्रैंडमदर को करते हुए. और दूसरी और चीज़ ये है कि उनके बीमार होने के बाद भी और सबके प्रोटेस्ट करने के बाद भी she was only praying because she wanted to finish her prayer because she has missed it on the previous day. So this is something that you need to remember. अब यहाँ पे let's look at the word hence. So ये जो words होते हैं therefore, thus, hence, etc. So ये ऐसे जो words होते हैं ये हमको बताते हैं कि हमने ये particular आंसर कर दिया है और एक कंक्लूजन के तौर पे हम उस सेम आंसर को रिपीट कर रहे हैं कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर कर. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड द कंक्लूडिंग वर्ड्स दैट वी हैव. सो ऑल दीज कंक्लूडिंग वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रीजन व्हाई वी यूज दीज कंक्लूडिंग वर्ड्स इज बिकॉज वी वांट टू टेल द एग्जामिनर व्हेन वी आंसर अ क्वेश्चन that I have mentioned an important point. Now I want to restate the point by giving a little more information. तो हम सिर्फ एग्जामिनर को ये दिखाना चाहते हैं थ्रू दीज कंक्लूजन वर्ड्स कि हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है बट हम इस इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कर रहे हैं थोड़ा और इंफॉर्मेशन देकर. सो वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर, दस, ऑल दीज जो कंक्लूजन वर्ड्स है ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू वरी. we'll be doing another session, a short video on how to recognize these words and what are the small phrases and words that you need to compulsorily use in your answers to score well. तो हम एक और सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस सीखेंगे जिनसे आप आंसर लिख सकते हो और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. Let's move to the next question.
Now let's look at this question. Discuss the way in which the sparrows express their sorrow when the author's grandmother died. So here also we have the word way, meaning ये भी एक ही पॉइंट का आंसर है. तो जब हम लोगों को एक ही पॉइंट का आंसर रहता है, इसमें दो तरीके से आंसर कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वी नीड टू इलैबोरेट लाइक अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. बट लेट्स से द सेम थिंग इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको 2-3 पॉइंट्स लिखना है, बट क्वेश्चन में सिर्फ वे लिखा हुआ रहता है या वन रीजन, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं. तो उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम लोग पैराग्राफ को स्प्लिट करेंगे. तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में वी लुक एट दैट. बट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट answer type question only, we have not split the paragraph into parts, we have only written one paragraph answer. Let's look at this question. Discuss the way in which the sparrows express their sorrow when the author's grandmother died. तो जैसे कि हमने एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड सेशन में सीखा और लेसन से समझा है कि जो ऑथर की ग्रैंडमदर है वो हर दोपहर में, हर आफ्टरनून को शी यूज्ड टू फीड ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज. तो वो एक ब्रेड को बहुत सारे टुकड़ों में करती थी और वो स्पैरोज को फीड करती थी. सो दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द टेक्स्ट. दिस इज हाउ शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर आफ्टरनून्स आफ्टर शी स्टॉप्ड स्पेंडिंग टाइम विद द ऑथर. नाउ लेट्स मूव टू द आंसर हियर. The author's grandmother fed the sparrows every day, and when she passed away, there were thousands of sparrows scattered on the floor. So this is also a very important point which we have picked up from the text. तो टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक से हम लोग जो सीखते हैं वही इम्पोर्टेंट है हमको आंसर्स देने के लिए. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो फिर एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है. The author's grandmother fed the sparrows every day, and when she passed away there were thousands of sparrows scattered on the floor. तो एक नहीं दो नहीं बट हजारों में स्पैरोज आए थे उनकी ग्रैंडमदर को देखने के लिए. All over the veranda and in her room right up to where she lay dead. तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरेंडा में खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपने उनके ग्रैंडमदर के डेड बॉडी तक कमरे के अंदर पहुंच गए थे वो सब स्पैरोज. सो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में ये आता है कि वो जो स्पैरोज थे वो बहुत लॉयल थे उस ग्रैंडमदर के प्रति. बिकॉज इवन आफ्टर शी डाइड, इवन दो दे न्यू वेरेंडा में आने के बाद कि आज खाना नहीं मिल रहा है उनको, फिर भी वो घर के अंदर उनके ग्रैंडमदर के पास गए थे. There was no chirping. So this is also something that we have picked up from the textbook. There was no chirping. So chirping is that small sound that birds make, which is very happy. तो morning time पे जब आप उठते हो सुबह तो you hear a lot of chirping of the birds, जो हम लोगों को बहुत खुशी देती है और birds भी खुद बहुत खुश sound करते हैं. So that is what is chirping. So here he is talking about how there was no chirping, which means the birds were not very happy. That's what we can understand or interpret from this sentence. तो इस सेंटेंस से हमको ये समझ में आता है birds खुश नहीं थे. The author and his family felt sorry for the birds. Why did they feel sorry for the birds? क्योंकि वो birds दुखी थे कि उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, इसीलिए फैमिली और ऑथर को भी खराब लग रहा था for the sparrows. And his mother fetched some bread for them and she broke it into little crumbs the way his grandmother used to and threw it to them. So basically उनकी ऑथर की मदर ने भी वही सेम चीज किया जो वो ग्रैंडमदर करती थी. ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ब्रेड को जो है वो स्पैरोज को खिलाने लगी. The sparrows took no notice of the bread. When they carried his grandmother's corpse off, they flew away quietly. Thus the sparrows showed loyalty and their sorrow at his grandmother's death. So if we look at this, the sparrows took no notice of the bread. So ये भी एक सेंटेंस है जो हमने टेक्स्ट बुक से पिक किया है. तो let's understand this part. Took no notice of. जो ये फ्रेज है इसको हम लोग बोलते हैं वे ऑफ राइटिंग और ये एक फिगरेटिव वे है बात करने का. तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, मीनिंग द बर्ड्स डिड नॉट केयर अबाउट द ब्रेड. द बर्ड्स डिड नॉट वांट टू ईट द ब्रेड.
बर्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां पे ब्रेड था और उनको खाने की भी इच्छा नहीं थी उस ब्रेड को. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय took no notice of the bread. Taking no notice of is the exact phrase that we are looking at. So to take no notice of something is to ignore something or not care about something. When they carried his grandmother's corpses, the dead body of, they flew away quietly. तो वो जब तक ग्रैंडमदर का बॉडी घर पर रखा हुआ था तब तक स्पैरोज वहां पे थी. Once the body was taken off, the sparrows also flew away. Thus the sparrows showed loyalty and their sorrow at the grandmother's death. So जैसे कि हमने previous question में भी देखा है, the word hence यूज किया था वहाँ पे, और यहाँ पे हमने यूज किया है the word thus. Thus, hence, therefore, all these are concluding words. And these help us in understanding कि हमने answer complete कर दिया है. हमको जो भी information देना था हमने लिख दिया है और ये एक final conclusion है. ये बताने के लिए it's very important that every questions, every answer that you write, you need to conclude it. So what's important, तो अभी तक जितने questions हमने discuss किया है, what we understand is there are two elements in a question, in answering a question, which are very important. The first is the introduction that we give. The second is the conclusion that we give. हर question का एक introduction भी बहुत important है और एक conclusion भी बहुत important है. तो यहाँ पे हमने introduction दिया है हर ऐसे question का जहाँ पे हमने points में answer किया है, और हमने कंक्लूजन दिया है हर उस क्वेश्चन का जहां पे हमने पैराग्राफ में आंसर किया है. सो प्लीज नोट दिस डिफरेंस. फॉर एवरी क्वेश्चन वेयर यू गिव एन आंसर इन पॉइंट्स, द इंट्रोडक्शन इज important, and for every question where you answer in a paragraph, the conclusion is important. तो हर point based question के लिए हमको introduction देना जरूरी है और हर para based question के लिए हमको conclusion देना जरूरी है. These are very important if you want to score more marks in your examination. Let's move to the next question. The author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know of this? Okay, तो जब previous जो questions हमने देखा उसमें 3 लिखा हुआ था, तो हमने 3 points दिया है. यहाँ पे authors examiner सिर्फ और सिर्फ word use कर रहे हैं different. मतलब यहाँ पे हम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, या बहुत सारे दे सकते हैं पॉइंट्स. तो यहाँ पे हमको लेसन से 4 पॉइंट्स मिलते हैं. वी गेट 4 पॉइंट्स फ्रॉम द लेसन, सो वी हैव इंक्लूडेड 4 पॉइंट्स इन दिस आंसर. So let's understand the question. What are the different ways in which we come to know that the author's grandmother was a religious person? Let's look at the points now. First point is she visited. Now इसमें हमने introduction नहीं लिखा है, so we'll understand why. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 parts में divided है क्वेश्चन. The author's grandmother was a religious person. Full stop. What are the different ways in which we come to know this? So यहाँ पे examiner हमसे पूछ नहीं रहा है कि grandmother religious है या नहीं. यहाँ पे the word discuss is not given. Here we do not have the word discuss. Here there is a statement and the author, the examiner is asking us to give different ways to prove this statement. मतलब हमको ये statement को reascertain करने की जरूरत नहीं है आंसर में. reascertain मतलब repeat या फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है आंसर में. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो प्लीज लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन. सो व्हाटएवर क्वेश्चंस वेयर वी हैव सीन दीज, वी हैव द वर्ड डिस्कस एंड हमको कितने पॉइंट्स चाहिए ये बहुत क्लियरली मेंशन था क्वेश्चंस में. इसीलिए हमने एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट डाला है और उतने पॉइंट्स डाले हैं. यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था और सिर्फ एक ही पॉइंट था, तो हमने यहाँ डाला है दोनों क्वेश्चंस में एक कंक्लूजन. और यहाँ पे ऑथर ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और सिर्फ हमसे पूछ रहे हैं इस स्टेटमेंट का different ways या proof देने के लिए. So in this particular question type we do not have to repeat the sentence because it is a statement and it is already proven in this question. So let's start off with the points. She visited the temple and read scriptures every day.
सो ये एक इंस्टेंस है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ग्रैंडमदर जो है वो बहुत रिलीजियस थी. Second point, she encouraged the author to learn her prayers by reciting them in a sing-song voice while getting him dressed for school. तो वो जैसे अपने ग्रैंडसन को स्कूल के लिए ड्रेस करती थी तो वो एक सिंग सॉन्ग वॉइस में, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वॉइस, दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेज व्हिच इज यूज्ड इन योर टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली ये लिखा है मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वॉइस. तो हमने लास्ट सेशन में सीखा है मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी चीज को एक ही टोन में बात करना without any ups and downs. So basically it's speaking like a robot you can say. Okay, तो एक monotonous sing song वॉइस में गाती थी ताकि ऑथर को वो सॉन्ग बाय हार्ट आ जाए या प्रेयर बाय हार्ट आ जाए. So that's all. That was another point which shows that the grandmother was very religious. She wanted to impart her religious abilities or her spirituality into her grandson. वो चाहती थी कि उनके खुद के जो ये क्वालिटी है रिलीजियस होने का वो अपने ग्रैंडसन में भी आए. She was upset that the author's new school in the city did not teach him holy scriptures or about God. She disapproved of the scientific knowledge the author got in his new school. तो this is another point जो हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया है और प्रीवियस सेशन में भी देखा है कि ग्रैंडमदर जो थी वो ओल्ड स्कूल को फॉलो करती थी, दैट इज द प्रीस्ट टीचिंग स्क्रिप्चर्स एंड अल्फाबेट एंड ऑल ऑफ दैट. सो शी वाज नॉट यूज्ड टू दिस न्यू स्कूल वेयर द ऑथर वाज टॉट साइंस. She prayed every day and did not miss. Now, in this point, what we are adding here is that उनके स्कूल में स्पिरिचुअलिटी और गॉड या फिर होली बुक्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं सिखा रहे थे. दैट इज व्हाई शी वाज वेरी अपसेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज she prayed every day and did not miss a single day of prayer until the end. Even on her last day, she completed a prayer which she missed the previous day, despite the author and his family's protest. तो ये भी एक बहुत important point है जो दिखाता है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले, because she has missed one particular days of prayer, she was very consistent and she wanted to compensate for that particular prayer which she missed. तो इससे भी हमको समझ में आता है कि उनकी आखिरी सांस तक या उनके almost the last breath of her life, she did not stop praying. Every single day she prayed, and because she missed one day's prayer, she compensated for it on the day she died by praying a little more than usual. तो ये जो 4 पॉइंट्स है इनसे हमको समझ में ये आता है कि ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत रिलीजियस थी. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंसेस पूछा जा रहा है, प्रूफ पूछा जा रहा है लेसन से कि टू प्रूव दैट द ग्रैंडमदर इज अ religious person. Let's move to the next question. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? Now this is a very important question and this is a long answer type question. तो इसमें हम लोग इस आंसर को अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो changing relationship, the author is only asking about 1.1 idea. तो यहाँ पे हमको points में नहीं लिख सकते हैं, but long answer type questions में जब आप short answer की तरह पैराग्राफ एक ही बना के लिखते हो तो वो बहुत confusing हो जाता है एग्जामिनर के लिए और वो बहुत बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि एक ही पैराग्राफ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है. There won't be any difference in one point to the other point that you want to make. So it's very important that for long answer type questions you divide the points that you want to write and put them in different paragraphs. तो यहाँ पे changing relationship की बात हो रही है. So if you see the first question that we discussed in this session, which was the 3 phases of the relationship between the grandmother and the author, वो discuss किया था हमने. So same वो 3 points को हमको यहाँ पे elaborate करके लिखना है और present करना है. So if you actually observe, the lesson is the same, the story is the same, जो content है उस lesson का वो भी same है. तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेंट से पूछे जाएंगे. आप अगर कंटेंट अच्छे से समझ जाते हो और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं कैसे एक आंसर को प्लान करके लिखना है ये आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत इजी हो जाते हैं और स्कोरिंग बन जाते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस वन हियर. So what we are doing here is
let's just quickly understand the three things that we want to put in here. तो यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है कि फर्स्ट में उनकी रिलेशनशिप कैसी थी ग्रैंडमदर और ऑथर की, सेकेंड पॉइंट उसमें से ग्रेजुअली जो चेंजेस आए जब वो लोग सिटी शिफ्ट हो गए थे, और थर्ड जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए थे तब, कॉलेज चले गए थे तब क्या चेंजेस आए, और आखिरी जो ऑथर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, उसके बाद जब वो रिटर्न आते हैं उस समय में क्या चीजें हुई है. तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड्स ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, एंड सिंस दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें एक ही पॉइंट को हमको लिखना है, उस पॉइंट को अलग अलग पॉइंट्स में हम ब्रेक करके पैराग्राफ्स में डिवाइड किए. लेट्स लुक एट दिस. द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर चेंज्ड विद टाइम. So here the word describe is given, so we can use an introduction. तो यहाँ पे एक statement नहीं दिया गया है, यहाँ पे word describe. So describe, discuss, इस प्रकार से जब words आते हैं, then you can definitely include an introduction. For statements we don't need an introduction. तो यहाँ पे हमने एक छोटा introduction डाला है. The relationship between the author and his grandmother changed with time. The next paragraph says initially. So words like this are again very very important. तो जैसे हमने इसके पहले concluding words के बारे में डिस्कस किया है, वैसे ये words होते हैं initiating words और starting words. ये वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पॉइंट को कैसे शुरू करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ट्रांसिशन कैसे होता है. ट्रांसिशन का मतलब होता है चेंज. सो हाउ डू वी चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डू यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो लेट्स लुक एट दिस. इनिशियली व्हेन द ऑथर वाज अ लिटिल बॉय, he was completely dependent on his grandmother. They went to a school together and she stayed with him till he finished and they would come back together. He participated in all activities like feeding the dogs with his grandmother. So here this particular paragraph जो हमने पहले भी डिस्कस किए, सेम चीजें लिखे हैं हमने और उनके बचपन में. तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि क्योंकि वो सिर्फ 1 मार्क का पॉइंट है, एक पॉइंट जो लिख रहे हैं उसके उनके चाइल्डहुड के बारे में, वी डिडंट नीड टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन. बट क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके मार्क्स ज्यादा हैं, हमको इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा देना पड़ेगा. तो इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ वी आर एडिंग दोस पॉइंट्स व्हिच वी डिड नॉट ऐड इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी आर एडिंग पॉइंट्स लाइक दे वेंट टू स्कूल टुगेदर, हाउ शी स्टेड इन द स्कूल, एंड हाउ they participated in activities together like feeding the dogs etc. नेक्स्ट पैरा. ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है. When they moved to the city, तो यहाँ पे भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिटी लाइफ के बारे में. तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में हमने लिखा है विलेज लाइफ के बारे में. तो देयर इज अ चेंज इन द पॉइंट. हमारा पॉइंट सेम है रिलेशनशिप के बारे में बात करने का, बट उस रिलेशनशिप को हमने अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पॉइंट हो गया है विलेज लाइफ का, सेकेंड पॉइंट हो गया है city life ka. That's why we have converted this particular idea into a second paragraph. So this is how we divide paragraphs. The moment we divide a point into multiple points, we divide each of those points into one paragraph. So let's understand this. When they moved to the city, it was a turning point in their relationship. So this is another point which we have directly taken from the lesson. तो lesson में ये particular point, this was a turning point in our relationship, bold words में लिखा हुआ है आपके lesson में. तो lesson में ये bold में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत important point है. इसमें अगर question इस lesson से आपके एग्जाम में आएगा तो उस point का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. तो आपके लेसन में ऐसे 2-3 फ्रेजेस है जो बोल्ड में है, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया. ये दिस आल्सो इज वन ऑफ दोस पॉइंट्स. So here it was a turning point in their relationship. So what do you mean by turning point? A turning point is something which changes everything. अभी तक एक चीज हो सकती है और अगले मिनट से दूसरी चीज हो सकती है. That's a turning point. Turning point is something which completely changes the idea of whatever we are discussing or any relationship or whatever. So here when they moved to the city, it was a turning point in their relationship.
He and his grandmother shared the same room and she would still get him dressed for school on most days. तो ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने मोस्ट डेज इसीलिए लिखा क्योंकि ये रेगुलरली नहीं होता था. विलेज में जब थे ग्रैंडमदर ये हर रोज करती थी, बट सिटी में आने के बाद ये कम हो गया था और वो हर रोज नहीं कर रही थी. And they shared the same room. However, she could not go with him as he went to school in a bus. तो वो उनको बहुत दिन most days पे स्कूल के लिए रेडी करती थी, but she could not accompany him to the school because she did not drop him off at school. He used to go to the school in a motor bus as mentioned in your textbook. However, she could not go with him. We have already discussed this. Okay, next. The author tried to tell his grandmother about the things he learnt in school, but she did not understand the importance of science he learnt in school and was also sad that his curriculum no longer included religious studies. तो ये भी पॉइंट हमने बहुत बार डिस्कस किया है आज के क्वेश्चंस में कि ग्रैंडमदर जो थी वो विश्वास नहीं करती थी साइंस वगैरह में, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके ग्रैंडसन जो है वो साइंस सीख रहे थे और गॉड और रिलीजन के बारे में कुछ नहीं सीख रहे थे. So she was really upset that the grandson was not learning anything about the scriptures, the holy scriptures or spirituality or God in the school. He was learning more or less whatever is scientific in his school. And the fact that he learned music in school disturbed her as she believes music was only for lowly people. So this is a new phrase which we have introduced here in the answer. तो ये particular word text book में नहीं use किया गया है. Text book में use किया गया है harlots and beggars, meaning indecent people and beggars. But instead of that we are using the word lowly, जो also सही है. और ये lowly का मतलब भी यही होता है कि जो लोग अपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं. So it could be beggars, it could be vulgar people, it could be indecent people, it could be anything as mentioned in the textbook. So here we are talking about how he learned music in school, जो also was not something that the grandmother liked. तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. उनको लगता था gentle folk did not learn music. So she was very disturbed, and at this point she stopped talking to the author. This difference in their interests made her to communicate less with the author. Though they shared the same room, they didn't have much in common anymore. So this is a very sad part that we are talking about here. जो यहाँ पे जो author next part में जो phrase use करते हैं कि the relationship between me and my grandmother snapped. So this is what has led to that snapping. That is ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ गए थे कि ऑथर जो है वो साइंस सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं और स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस थिंग्स नहीं सीख रहे हैं, और ग्रैंडमदर ये चाहती थी कि वो ये सब छोड़कर रिलीजन पे ध्यान दे, भगवान पे ध्यान दे. दैट पर्टिकुलर This difference of opinion led to the fact that they communicated less with each other. They didn't speak much to each other although they were in the same room. Next part. So here also if you see, though they shared the same room, they didn't have much in common anymore. This is a type of conclusion that we are using for this whole point or paragraph. When the author decided to go to the university. Now this is third point. Okay, so if you have seen, we have used the first point with initially, the second point with moving to the city, the third paragraph with when the author decided to go to the university. So let's look at this. When the author decided to go to university, they no longer shared a room because the author lived in his college room. This meant that the one thing that was left in common between them, that is of sharing a room, was snapped. They grew further apart. तो यहाँ पे जो ये चीज़ है शेयरिंग रूम, अब वो भी खत्म हो चुका है क्योंकि ऑथर जो है वो यूनिवर्सिटी चले गए थे जहाँ पे उनको उनका कॉलेज का रूम दिया गया था और वो अब घर पर नहीं रह रहे थे. तो एक जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि उनका रूम शेयरिंग अकेला कॉमन पॉइंट था क्योंकि उनके बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे. इवन दैट वन कॉमन पॉइंट वाज snapped the moment the author decided to go to university. Now we observe there are two things here. One, we have used this particular phrase which is in pink color between two commas.
So why is there a need to write something between commas? तो कोई भी चीज हम लोग दो कॉमास के बीच में तब लिखते हैं जब वो एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. So this is not a regular information that we are giving. This is an additional piece of information which we are giving to strengthen our idea that we have mentioned. तो कोई भी ऑथर या कोई भी चीज आप पढ़ते हो, आर्टिकल या के टेक्स्ट बुक का लेसन हो गया या आप आंसर्स भी लिखते हो, तो इन चीजों पर ध्यान रखिए कि जो भी आप एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो आपके आंसर्स में, put them in between two commas. That shows that this is an additional information you're giving. ये part of the answer नहीं है, ये बस आपके आंसर को बेहतर बना रहा है, ये एक बोनस पॉइंट है जो आपने लिखा है. That is of the sharing room. क्योंकि even without this point, let's say I remove this point, we can still read. This meant that one thing that was left in common between them was snapped. The sentence is still correct. ये पूरा पार्ट में अगर निकाल भी दूँ सेंटेंस से, तब भी ये पूरी सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल है और करेक्ट है. तो ये जो पार्ट है वो सिर्फ ये कर रहा है कि उस सेंटेंस को थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है. So these things you need to keep in mind when you are writing an answer. Now let's move to the last part. They grew further apart. They grew further apart मीने इसके पहले ऑलरेडी वो लोग बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे थे, बट जबकि ऑथर कम्प्लीटली घर पर भी रहने नहीं लगे थे, तो they grew even apart, more apart. Now let's move to the last paragraph. Finally. So here the word finally shows that this is our last paragraph. Finally, when the author decided to go abroad for higher studies, he almost thought that would be the last time he and his grandmother would have any physical contact. जब text book में the exact sentence that is given is that his grandmother kisses him on the forehead and he enriches he feels happy about that moist thing that is there on his forehead, the kiss that his grandmother gives, because he feels that could be the last physical contact between them. Or the exact word that he also uses is at her age or at that age no one can tell. तो हमने उस समय भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में कि नो वन कैन टेल यहाँ पे मतलब होता है कि ऑथर बेसिकली थिंक्स दैट एट दैट एज, एट अ पर्टिकुलर एज व्हिच इज वेरी ओल्ड, डेथ इज इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है कि वो होना ही है, that is going to happen irrespective of what. No one can stop it. That is what inevitable means. So at a certain age death becomes inevitable. तो उस समय में उस एज में कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई ये नहीं बता सकता है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे या कब खत्म हो जाएंगे. So here this is what exactly the author is talking about, that when he left for his higher studies and when his grandmother kisses him on the forehead, he feels that could be the last time that his grandmother would kiss him, or he would have any physical contact with his grandmother. However, his grandmother knew that she would be alive to see him when he came back from his studies after 5 years, and she did meet him one last time when he returned after his education before she passed away. तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है through this particular part that the grandmother was a very willful person. उनको ये बहुत अच्छे से पता था, और टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा रहता है कि ऑथर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5 साल तक चले जा रहे हैं. He is going away for 5 years, which would mean that his grandmother would be very unhappy and upset that he was leaving. But to his surprise, his grandmother does not show any kind of emotion when she comes to leave him off at the station. वो किसी प्रकार का इमोशन नहीं शो करती है, वो बिल्कुल अपसेट नहीं होती है और उनके ग्रैंडसन को गुड बाय कर देती है. तो इसके बाद जब ऑथर रिटर्न आते हैं, he sees that his grandmother is very much alive and that was not the last time that he would meet or see his grandmother. तो इस बात का यहाँ पे हमको समझ में आता है, and she did meet him one last time when he returned after his education before she passed away. तो जिस दिन author return आता है, that is the day, as we discussed on earlier question, that she beats the drums and sings songs, और उसके तुरंत next day she passes away. So we can understand that she probably was alive only to see her grandson one last time. So ये पूरे question में हमने
उनके स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप को डिवाइड किया है. First stage extremely close, second stage thoda they grow apart, third stage when the relation is completely snapped, but the fourth stage shows that although they were apart for 5 years, the grandmother still loved her grandson and eagerly waited for him to return to see him one last time before she died. Now let's move to the next part. So let's look at this. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show us. So show this. So here also he is asking us to give instances. यहाँ पे plural है, but we don't have a number. So we can mention any number of instances that we want because this is a long answer type question. We are going to give all the instances that are present in the textbook. Let's look at the first one. So यहाँ पे भी हमने हर एक instance को एक paragraph में divide कर दिया है. Because we have different instances and it's a long answer type question, the best way to write it is to again divide it into paragraphs ताकि वो एक जैसा मोनोटोनस लंबा एक पैराग्राफ ऐसे जैसा न लगे और थोड़ा कंसिस्टेंसी रहे और डिफरेंट पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर सके. सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज The author's grandmother was indeed a very strong lady. She took care of the author as a young boy all by herself. She had very strong beliefs and she tried to impart them to the author too. She used to recite her prayers so that the author also learnt the prayers. She did not approve the science and music that he learned and resigned to her routine. तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं that there are 2-3 points here. One, when the grandson was a very young boy, when the author was a very young boy, उनके parents city shift हो गए थे, which means the grandmother all by herself took care of the grandson, took care of his education, took care of dropping him off at the school, bringing him back from the school, and she lived all alone by herself with her grandson. This shows that she is actually a very independent woman. तो यहाँ पे first point हम लिख रहे हैं उनको strong दिखाने के लिए that she is a very independent woman. वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी. इनफैक्ट उनके ऑथर के बचपन में the author was very dependent on his grandmother and she was a person with very strong beliefs और वो उनके belief system को उनके grandson को भी सिखाना चाहते थे. जब उनके grandson when her grandson did not continue with this religious practices or prayers, she resigned to her routine. तब उन्होंने कोई she did not fight with her grandson, she did not try to change her grandson's mind, but she accepted that what she believed in is her choice and what her grandson likes to believe is his choice. तो यहाँ पे इनका grandmother का बहुत एक mature character दिखता है कि वो not only बहुत independent थी but also she was very mature to accept the fact that her opinion was different from her grandson's opinion and she resigned to her routine. She gave up on the fact and she accepted that their opinions were different. The second part, from the text we can say that she was kind-hearted as she fed chapatis to the dogs and later fed bread to the sparrows. She cared about these creatures and in return these creatures also showed a lot of loyalty and affection towards her. तो towards the end उनके grandmother के death के बाद ये हमको पता चलता है कि the sparrows scattered around in the veranda and in the room close to her dead body and they stayed quietly and they did not even eat the breadcrumbs. So इन सब चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि grandmother के प्रति वो creatures जो थी dogs and the sparrows that she used to feed so affectionately, they were also very loyal to the grandmother and the grandmother also was very kind-hearted क्योंकि वो animals को feed करती थी. This shows that she was also a very kind-hearted person. Next para. Further, when the author decided to move abroad for 5 years for his higher studies, he thought he may not see his grandmother again as she was old and death at that age is inevitable. So this is the word that we discussed earlier. Inevitable का मतलब होता है something that cannot be stopped, something that is definitely going to happen. However, she through her will, तो ये point हम समझते हैं. This also I have put again between 2 commas because this is again an additional piece of information. Will का मतलब होता है एक strong कोई भी चीज को करने का जो एक strong
पावर होता है, कोई भी चीज को करना है, ये जो एक विल पावर होता है, उस विल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सो थ्रू हर विल पावर, थ्रू हर stubbornness that she has to do something, through her willingness to achieve something, stayed alive until the day her grandson arrived and embraced death only after seeing him. तो यहाँ पे हम एक चीज, going back to the textbook, there is a sentence which says that no one at her age can tell, and the immediate next sentence says but my grandmother could. So the author writes the sentence that but my grandmother could. Why? Because the author very clearly in the next paragraph explains that his grandmother knew that she was not going to die until his grandson returned, and that is why she didn't show any emotion in the railway station. So in the same manner here, through her will she stayed alive, and here because we are concluding this point, we again use the word thus. Thus we can say that she even chose her own death at her own time. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास इतना विल पावर था कि वो अपने ग्रैंडसन के लौटते तक जिंदा रहना चाहती थी, और एक आखिरी बार उनको देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया that because I have seen my grandson now, I can peacefully pass away. So from this particular, all these ideas that we have discussed, we can understand that yes, the grandmother or the author's grandmother was actually a very strong person. So this is the conclusion here. From the above mentioned instances, we can certainly say that the author's grandmother was a person with strong character. So this is how we conclude the question. Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? So if someone asks a question like this is less likely to come in your examination, but just एक point of discussion के तौर पे हम छोटा सा एक discussion कर लेते हैं इस पे. तो आप इस ऐसे question में जब कोई discussion होता है, you can talk about a grandparent that you have lost, or a teacher who's very close to you, जिनसे आपने बचपन से बहुत कुछ सीखा हो, or a family member that you are very close to. So the points that you can mention here are the emotional connection that you have with the person. तो emotionally आप उनसे कितने close थे, कितना affection आपको उनके लिए था और उनको आपके लिए था. The common activities that you did together, आप साथ में क्या क्या activities करते थे. Significance of their existence in your life and any incident or instance that changed your life. तो उनका आपके लाइफ में जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी लेस लाइकली टू कम इन योर एग्जाम, but if you want to discuss this, these are the points that you need to keep in mind. You need to talk about the emotional connect, common activities, and what was the importance of that person in your life. उनके वजह से आपकी लाइफ किस प्रकार से चेंज हुई है. Now let's quickly look at this question. Notice the following uses of the word tell in the text. Match the meanings to the uses listed above. So let's understand these sentences. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. तो जैसे कि हमने बहुत बार पहले डिस्कस किया है कि telling the beads यहाँ पे होता है, जो beads को इस प्रकार से turn करते हैं in order to count the number of times the prayer is said. So rosary beads की बात हो रही है यहाँ पे. टेलिंग का यहाँ पे मतलब होता है काउंटिंग. So यहाँ पे हम लोगों का आंसर है यहाँ पे count while reciting. Let's look at the second point. I would tell her English words and little things of Western science and learning. I would tell her. So here he is talking about not giving information. यहाँ पे information नहीं दे रहे हैं author, सिर्फ बता रहे हैं. So बताना और information देने में बहुत difference होता है. So यहाँ पे tell का जो meaning हो रहा है वो सिर्फ ये है that I am making someone know something. So for example, I told you I will finish this work by tomorrow. So there I am only giving a piece of information, and I don't expect anything from the other person. I don't expect the other person to respond or do anything about it. ये सिर्फ मेरी तरफ से मैं एक point बता रही हूँ, इसका ये मतलब आता है. So I would tell her English words and little things of Western science and learning. So basically it means that I am telling somebody, meaning I am just giving them certain facts. I'm just giving them certain information, but I'm not expecting any kind of response from them. तो यहाँ पे जो A है, make something known to someone in spoken or written words is tell. So this is the word that we can match with A.
Let's look at 3. At her age, one could never tell. So as we discussed earlier, at her age, one could never tell. यहाँ पे मतलब हो रहा है you cannot be sure. At that age, you can never be sure about the death or life. So be sure. She told us that her end was near. That is to give information to somebody. Now let's move to the next slide. Notice the different senses of the word take. So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं the word take को दो प्रकार से. To take to somebody, it basically means to begin to do something as a habit. To take to somebody basically means कोई भी चीज को एक आदत बना देना. To take ill basically means to suddenly become ill. So when if I want to give a particular example, I can say that after eating too much food, he was taken ill the next day. So बहुत सारा खाना खाने की वजह से next day the person has become sick. To take to somebody is something. Then there you can also say that because once I started swimming every day, I really started to take to swimming. Meaning ये एक habit बन चुका है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है रोज करके. So this is what we are talking about in these contexts. Then let's look at this question where locate these phrases in the text and notice the way they are used. So this is what we have found from the textbook. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो यहाँ पे take to something का usage दिया गया है. So there were no dogs and hence she took to feeding sparrows. The second sentence, the next morning she was taken ill, meaning she became sick और वो बीमार हो गई थी. Let's look at this last question now. The word hobble means to walk with difficulty because the legs and feet are in a bad condition. Pick the words from the box below that also refer to a manner of walking. इसमें से ऐसे कौन से words हैं जो walking को define करते हैं? That is the question that we are referring to. Let's look at the words quickly. Haggle, shuffle, stride, ride, waddle, wriggle, paddle, swagger, trudge and slog. Now let's quickly understand this. Haggle का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना. So it's a small dispute or a quarrel. So you can also say it's a small, disagreement between two people. So it can be a small disagreement between two people. It can be a dispute. It can be a quarrel. So basically haggle का मतलब होता है छोटा सा argument या झगड़ा या नोक झोंक जो होता है वो उसको haggle बोलते हैं. Let's look at shuffle. So shuffle basically has two meanings. The shuffle that you usually see in your music playlist when you put in shuffle, so you don't know which song comes next. So that is one meaning of shuffle. The next meaning of shuffle basically means to walk in a manner where you are dragging your feet without lifting them off the floor. तो जब आप आपके पैर को जमीन पे घसीटते हुए चलते हैं उसको shuffle बोलते हैं. So it's dragging your feet on the floor without really lifting them up while you walk. That is what is shuffling. So usually when do we shuffle? जब हमको एनर्जी नहीं रहता है या जब डेलिबरेटली हम ऐसा करना चाहते हैं या जब हमारे पैर कीचड़ में हो जाते हैं और पैर लिटरली उठता नहीं है इजीली. So these are some ways where we probably shuffle and not walk. A stride is basically a very long step that we take. Stride का मतलब है बहुत लंबे steps लेके चलना. So walking very fast and taking big steps are basically stride. Then ride is used for horse riding. कोई भी एक एनिमल को राइड करते हैं जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया है, कैमल राइडिंग हो गया है या कोई vehicle, especially a two-wheeler is called ride. So you ride a bike, a bicycle, etc. But you don't ride a car, you drive a car. So जो four-wheelers हैं उनको हम drive use करते हैं और जो two-wheelers हैं और जो animals हैं उनके लिए हम लोग ride word use करते हैं. Then next we have waddle. So waddle is basically taking very small short steps in walking. जब चलते समय बहुत छोटे स्टेप्स लेके जब चलते हैं उसको waddle बोलते हैं. So the best example of waddling will be a small kid
a toddler, a 1 year or 2 years child who's just learned to walk. The way that child walks, बहुत बड़े-बड़े steps नहीं ले पाते, बहुत छोटे-छोटे steps लेते हैं. So that is called waddling. Waddling can also mean टहलना, where you're not taking very big steps, so you're not actually walking, but you're just walking in a very relaxed manner with short steps that you take. Then wriggle. Wriggle basically means to get out of a situation, or you can also say wriggle is basically to shake something or to move something rigorously in order to open a knot or to remove something from a very constrained place. So wriggle का मतलब होता है कोई भी चीज कहीं पे फंसी हुई हो या कोई ऐसा एक नॉट है तो उसको खोलने की कोशिश करना या उसी फंसी हुई चीज को बाहर निकालना is basically wriggling. Then paddle can have two meanings again. पैडल एक नाउन भी यूज हो सकता है और पैडल को एक वर्ब की तरह भी यूज करते हैं. सो नाउन इज एन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इज एन एक्शन इन दिस केस. सो एक पैडल वो होता है जो एक जैसे पानी में बोट में हम आगे जाने के लिए जो यूज करते हैं उनको पैडल बोलते हैं, या जो वेब्ड फीट होते हैं डक्स के, पेंगुइन्स के, उनको भी पैडल बोलते हैं. या जब आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हो एंड वेयर दोस स्लिपर्स, दोस आल्सो कैन बी पैडल. सो एनीथिंग व्हिच बेसिकली हेल्प्स यू मूव इन वाटर इज अ पैडल, एंड मूविंग इन वाटर इज paddling as a verb. Then swagger is to walk with a lot of pride. जब आप बहुत प्राउड फील करते हैं और आप दिखाने के लिए चलते हैं, so that is what is swagger. So swagger is basically to walk in such a way that you feel that you are, you're being very proud of yourself or you're trying to show off something. That is the swagger. The trudging, again trudge और slog का similar meaning है. ट्रज एंड स्लॉग दोनों जो है हम तब यूज करते हैं जब किसी को एनर्जी नहीं है चलने की और या फिर बहुत थके हुए हैं, एंड दैट इज हाउ दे वॉक. सो प्रोबेबली समबडी इज वेरी स्लम्प्ड, जो एकदम झुक के बहुत धीरे से चल रहे हैं, जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, उसको हम ट्रज या स्लॉग बोलते हैं. So here's a quick review of the meanings that we just discussed. Haggle is a dispute or a petty quarrel. Petty का मतलब होता है बहुत छोटा, not very important. Shuffle, to walk without lifting your feet. Stride, to walk with long steps. Ride, to move with the help of an animal or vehicle. Waddle, to walk in short steps. Wriggle, to move something by twisting or shaking it constantly. Paddle, an object that helps you to move in water. To move forward using help in water or move forward using webbed feet, जैसे penguins etc. Swagger, to walk in a boastful or with a lot of pride. Another word for swagger can be strutting. So strutting also basically means to do the same. Trudge, to walk as if tired or lacking energy. Slog, a long tiring walk or long laborious work. तो slog जो word है वो सिर्फ और सिर्फ चलने में ही नहीं यूज होता है, बट slog को हम एक काम, किसी भी काम को करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. So students, in this particular session, in this whole session, we have covered all the CBSE NCERT questions of short answer type and long answer type questions. We have discussed the various other questions that are there in your textbook. We have also discussed some additional points. We have discussed, a pattern in which you need to answer your questions, how to increase your ability to make, better answers. तो आपके answers के writing skills को कैसे improve कर सकते हो, हमने उसके बारे में सीखा है. तो नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सेशन हम लोग करेंगे जिसमें we will discuss the words and phrases that will really help you with your answers. So we'll do that in the next session. So that's it. Okay, thank you very much. So please subscribe to our channel and like the video. This will really help us in making and creating more sessions. आपको कोई भी doubts हो session के बारे में, so please comment here so that we can also respond to those comments. And if you subscribe to our channel and use this code Riti, you will get an additional 10% discount on the fee. Thank you so much.